in the chat box. Okay, so write down adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? We have to cover three concepts in this. One is cofactors. Second, major cofactors. And third one will be your adjoint. And the fourth one will be finding A inverse using S. So the concept is very simple. थोड़ा process को ध्यान से देखेंगे सारे. Find, write down the question, find the adjoint where A is given by 1, -1, 2, 2, 3, 5, -2, 0, 1. This is 5. This is 5. Okay, so how will we find adjoint? सबसे पहले हम निकालेंगे minor cofactors. Minor cofactors. अब minor cofactor कैसे निकलेंगे? We name them by M11. स्टाइलस में प्रॉब्लम आई रही है. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. ओके, अब ये कैसे निकलेंगे? इनको M11 निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे A11. अब A11 कैसे निकलेगा? अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं यहाँ पे, यू कैन सी दैट A11 की प्लेस पे क्या आ रहा है 1. तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स बच गए? 3, 0, 5, 1. इज दैट ओके? 3, 0, 5, 1. तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 3, 0, 5, 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू 1 -5 इंटू 0. सॉल्व करके कितना बन गया? 3 minus 0, the value is 5. Is that okay with all? Yeah. Type in the chat box. Now, next will be what? A12. Moving on back, A12. Over here, A12 will be what? This. So leave the middle column and topmost row. I will be left with what? 2, -2, 5, 1. So write them now. 2, -2, 5, 1. Again cross multiply. 2 into 1 -2 into 5. On solving, this becomes what? This becomes 2 plus 10. So the value is 12. Similarly, A13. Let us find A13. Leave the third column and first row. It would be 3, 0, 5, 1. 3, 0, 5, 1. Again cross multiplying it. 3 into 1, 5 into 0. So value becomes 3 minus 0. The value is 3. नोट कर लो इसको. Please type, Isha. I cannot hear anything today. Sir?
After noting down, please type yes or no. I'll continue then. Let us move on to next. That is, अब हमें निकालना है मिडिल रो में. That will be what? A21, A22, A23. Now A21 will be at this place. Leave the middle row and first column. तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ गए? -1 2 0 1, -1 2 0 1. Again cross multiplying it. -1 into 1 minus 2 into 0. So the value becomes -1. Okay. A22. A22 is at this place. This is what? This is basically center row and middle column. So this becomes 1 2. The value will be what? 1 2 2 1. This will be what? 1 minus 2 2 1. Cross multiplied. 1 into 1 minus 2 into 2. This becomes -1 plus 4. The value becomes what? 5. Similarly, A23 में the middle row and the extreme right column. So the elements which will be left will be 1 -1 -2 0. On solving this, it becomes 1 into 0 minus -2 into -1. So this becomes 0 minus 2. The value is what? -2. Try to find A31, A32, A33, A31, A32, A33. Done? Okay, आपने कर लिया. Shruti, what about you? Shruti, what about you? Okay, चलो. Let us write down the values. ईश्वर हो गया? A31. A31 will be what? We will be finding A31. A31 will be given as A31 will be -1 2 3 5. So opening up the brackets, -1 into 5, 3 into 2. This becomes what? -5 minus 6. The value is -11. What is A32? A32 will be 1 2 2 5. So this will be 1 into 5 minus 2 into 2. So the value becomes 5 minus 4, that is 1. A33. A33 will be 1 minus 1 2 3.
and that would be 1 into 3, 2 into minus 1. So 3 plus 2, the value becomes what? 5. So all these a's are known as minor cofactors. Minor cofactors. Moving on to the next concept, how to find major cofactors now. Major cofactors cannot be found until unless we have not found out these minors. Okay. So major, how to find the major ones? Now majors are represented by MIJs. MIJ, where this means the row and this means the column. So MIJ will be given by minus 1 की power I plus j into Aij. Please note down this formula. Major cofactors are given by Mij is equals to minus 1 की power I plus j into A dot into Aij, where I stands for the row number and j stands for the column number. Let us try to find M11. How to find M11? How to find M11? M11. M11 will be given by minus 1 की power minus 1 की power 1 plus 1 into A11. Now minus 1 का square, and what is the value of A11? A11 was 3. So this becomes 1 into 3. So the value becomes 3. Note this down. Let us move on to then finding M12 and all. Note it down. Let us find M12. What will be M12? M12 is minus 1 की power 1 plus 2 into A1. This will be minus 1 की power 3, and A12 is given by minus 12. So minus 1 into minus 12. This will be what? 12. M13 minus 1 की power 1 plus 3 A13. This will be minus 1 की power 4, and A13 will be what? 6. So minus 1 की power will be this into 6. So the value is 6. Try to find all these. M31, sorry, M21. Find out this M21. Minus 1 into minus 1. The value is 1. Find out M22, M23, M31, M32, M33.
Okay. What about others? M13 will be 3, right? श्रुति टाइप करो. श्रुति प्लीज टाइप अगर नहीं. M13 is 3. M13, M13, M13. 6. मैं लिख देता हूँ सारे जो मेरे पास आंसर हैं. M22 is 5. M23 is 2. M31 is -11. M32 is -1. And M33 is 5. M13 is 6. M13 is 6. Let us check A13 कितना आ रहा है. A13 is 3 minus 3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मैंने गलत लिखा हुआ यार, ये मेरा गलत निकला हुआ. दिस विल बी 2 over here and 3 over here and -2 over here and 0 over here. So this becomes what? 2 into 0 minus 2 into 3. So this value should be 6. तो वहाँ पे वो 6 आएगा. वो डिफरेंस है वहाँ पे. तो आपका M13 will be 6 में. तो ठीक था. गाइज आ गया सबका आंसर? पता लग गया सबको मेजर और माइनर कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ईश्वर, एनी डाउट? ईश्वर, एनी डाउट? ईश्वर, एनी डाउट? अवनी, एनी डाउट? अवनी, एनी डाउट? Okay. Now after finding the major and minor, how to find adjoint of A? Adjoint of A is basically a matrix formed by major cofactors का transpose. Put all the values of M11s. This will be what? 3 minus 12, 6, 1, 5, 2, minus 11, minus 1, 5. इसका ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था. फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम्स. This is my adjoint A. Please note it down. This is my adjoint A. कर लिया नोट सबने? एडजॉइंट क्लियर हो गया सबको कैसे निकलते हैं? अब लास्ट पार्ट हमारे पास आता है A inverse. A inverse will be given by adjoint A divided by determinant A. अब ये determinant A कैसे निकलता है? This is determinant A. Determinant A. अब look at this very carefully. 1 minus 1, 2, 2, 3, 5, minus 2, 0, 1. अब आप देखो इसमें डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है. फर्स्ट दिस एलिमेंट, इसको लिख दिया. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो बचा क्या आपके पास? 3, 0, 5, 1. देन पुट अ माइनस साइन. राइट डाउन दिस एलिमेंट -1. अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो तो बचा क्या? 2, -2, 5, 1. देन राइट डाउन प्लस. अब यहाँ पे क्या है?
Leave this row and column. 2 minus 2 5 1. Now how to solve it? 1 cross multiply. 3 into 1 minus 5 into 0. माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 into 1 minus 2 into 5 plus 2 into 1 minus 2 into 5. This will become what? I'm solving it over here. 1 into 3 minus 0. 1 2 plus 10. 2 plus 10. Just wait, let me check the second one. मुझे लगता है सेकंड वाले में गलती हुई है. यहाँ पे -1 में 2 -2 5 1. यस, गलती थी. थर्ड वाले के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा बेटा और यहाँ पे 0 आएगा. सो दिस विल बिकम 2 into 0 एंड -2 into 3. यहाँ करेक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +6. तो कितना बन जाएगा? 3 + 12 + 12. So the value becomes what? 27 over. Is that okay? डिटर्मिनेंट निकालना आ गया सबको? ईश्वर, ईश्वर आ गया? यस, नो? चलो, अब ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे? ए इनवर्स. तो मेरा ए इनवर्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए कितना है? 1/27 हो गया. और मैट्रिक्स कितना था मेरे पास जो एडजॉइंट मेरा बना था? इट वॉज 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5. So this is my A inverse. Is that okay? Please do a question for me. Note it down, then please do a question. Shall I give the question? Giving you the question. Question says that inverse निकालना है matrix A का. That is given by 1 -1 2. Then it will be 0 2 -3 3 -2 4. You have to find the inverse of this. Start doing. Back in 5 minutes.
Okay, I'm writing down the minors. The value of minors is A11 is basically 2, A12 is 9, A13 is minus 6, A21 is 0, A22 is minus 2, A23 is plus 1, A31 is minus 1, A32 is minus 3, and A33 is, kindly check. Shruti, what about you? Shruti, what about you? Okay, Ishwar, your answers? Ishwar, have you tallied your answers? Is Ishwar there in the class? Let us check. Ishwar, are you there? I'm finding out ये minors निकालने बेटे मैंने minors के आंसर पूछा हूँ मैं आपसे चेक करो. I'm writing down the answers of majors over here. The answers of majors are what? These वाले. ये आपके small आ गए ना cofactors minor. ठीक है M11 is 2, M12 is minus 9, M13 is minus 6, M21 is 0, M22 is minus 2, M23 is minus 1, M31 is minus 1, M32 is 3, M33 is, please check all the majors. Okay, good. Shruti, yours. Shruti, yours. Avni. Okay. Now, next step would be adjoint. Kindly tally your adjoint. I'm writing it after taking the transpose. I repeat, I'm taking it after taking the transpose. Please check. Find determinant A. This should be equals to minus 1. Shruti, is it for adjoint or is it for determinant A? Is adjoint A clear to all of you? First of all, yes or no? Avni, is adjoint A clear to you? Is determinant A clear to you? So the final answer will be what? A inverse is equals to 1 by determinant A into 1 by determinant A into adjoint. Doing the last question for today. Find the inverse of
find the inverse of A is equals to 1, 2, 4, 3 minus 19, 7, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 3 minus 19, 7, 2, 4, 8, if it exists. If it exists. Now, सी हमने अभी तक क्या सीखा कि सबसे पहले आप क्या निकालो, मेजर्स निकालो, सॉरी माइनर्स निकालो, फिर मेजर्स निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो. लेकिन एज पर प्रोटोकॉल सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, डिटर्मिनेंट. निकालो जरा इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है. जीरो. यस. जीरो. यस. ईश्वर आ गया जीरो. ईश्वर आ गया है जीरो डिटर्मिनेंट की नहीं. यस. अब देखो पॉइंट, इफ द डिटर्मिनेंट a is equals to 0, if the determinant a is equals to 0, then a inverse does not exist. Then a inverse does not exist. If determinant a does not, if determinant a is equals to 0, then a inverse does not exist. ठीक है. तो आप देख सकते हो आपके वाले केस में डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो इसका मतलब इसका a इनवर्स पॉसिबल नहीं है. If a inverse is not possible, need not to find any minor cofactors, major cofactors and adjoint. ठीक है. क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है. Simply write a inverse does not exist. Is that okay with all? Chalo, I will not be moving with the next concept due to this technology problem today. I'll repeat what we did today. We started off with the topic of determinants, in which there is a this is the most topic in this, how to find inverse using adjoint method. Adjoint निकालने के लिए हमें आना चाहिए माइनर कोफैक्टर्स निकालने. माइनर कोफैक्टर जब निकलेंगे उससे हम मेजर कोफैक्टर्स निकालेंगे. मेजर कोफैक्टर्स को जब हम एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो उसका ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी योर एडजॉइंट ए. और ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए के मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो किस चीज से, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू से. अगर डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो आप सिंपली इनवर्स नहीं निकाल सकते. रीजन बीइंग एवरी एलिमेंट विल बिकम इन्फिनिटी. ठीक है. मैं आपको एक होमवर्क असाइनमेंट भेज रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है. our next class is tomorrow at 8:30 again. So in that we will